understand properly how number line looks like and how to plot numbers on number line. ठीक है? All ready? Right, very good. Chalo. So put your heading as number line and let's learn. Our topic is plotting rational numbers on number line. Plotting. Yeah. And usually they'll give you positive rational numbers. Rational numbers on number line. Very easy. Children unnecessarily get scared about it. ठीक है? सृष्टि, whenever you get time, near your right foot ही गिरा हुआ है, कभी भी आपको टाइम मिले. Plotting rational numbers on number line. Okay. Let's first see how a number line looks like. How a number line looks like, and then we'll take problems. A number line is usually represented like this. A line is a geometric figure which has got arrows on both sides, means it goes on increasing. On the center we usually show 0, and this side is all the positive numbers 1, 2, and then dot dot, and this is your positive infinity, and you can have negative 1, negative 2, and it goes on this side 3 dots. This can be your negative infinity. This is how a number line looks like. हमको इस number line में कोई भी rational number plot करके दिखाना है. Suppose somebody tells you where is 5, you know if 5 यहाँ पे होगा. Where is 243 on this side. But now we have to plot rational numbers. ठीक है? So how to do it? Steps. Let's see the steps. Number 1. The first step is given rational number can be proper or improper fraction. Have you understood? जो भी rational number आपको plot करने देगा, that rational number can be either a proper fraction or it can be improper. इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है. Don't just copy, अंधाधुंध copy मत करो, समझ के copy करो. A given rational number can either be a proper fraction or improper fraction. Yes, it cannot be a number. Number होने से तो natural number हो जाता. सबसे पहले हम लोग देखते हैं proper fraction के केस में. Let's first pick up the proper fraction case. Proper fraction means A, the value is always less than 1. Yes or no? Hey, चुपचाप हो गया. Proper fraction मतलब less than 1 ही होगा ना? Any proper fraction is less than 1, है ना? Fine. Harshit, fine. Any proper fraction is less than 1. What is a proper fraction? Sir, 2 divided by 7. Denominator बड़ा करना है. Proper fraction का मतलब क्या है? Proper fraction means denominator is greater than numerator. Value is less than 1. But greater than 0. Obviously. 2 divided by 5. Or say 1 divided by 2. 1 divided by 2. Is it a proper fraction? Yes. इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5. 0.5 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है. मतलब means if we get a proper fraction, we can write something like this. If your this funda is clear, you will plot any number. If you get a proper fraction, our proper fractions are always greater than 0 and less than 1. Do you agree this or not? अभी से लेकिन थोड़ा थोड़ा मैथ्स टफ होना शुरू होगा. बार बार बोल रहा हूं. A proper fraction is greater than 0 and less than 1. Yes, sir. Yes? No, what? It's relevant also. Yeah, you tell me about it. Minus, I said that we are working on positive numbers now. then You will be given to plot positive numbers only. We are taking positive numbers.
Is a proper fraction greater than 0 and less than 1? Yes, sir. Agreed. That means हम जो भी number line बनाएंगे, our proper fraction will be a number which will be in this range. Do you agree or not? Yes, sir. In this range. So your first doubt goes out of mind. If we are given a proper fraction, the number will be always between 0 and 1. टेंशन है ही नहीं प्लॉट करना. अब प्लॉट करना सीखे, 0 और 1 के बीच में ही होगा. ये चीज समझ में आया? Whatever I said, Anna, are you clear? Okay. So let's say, now let's take one example. The first example, see I say plot 5 by 8 on the number line. Plot 5 by 8 on the number line. ठीक है ना? आइए कैसे करेंगे उसको. सबसे पहले बनाइए एक नंबर लाइन. डोंट मार्क एनीथिंग टिल आई से. जस्ट ड्रॉ द लाइन. जस्ट ड्रॉ द लाइन. ड्रॉ द लाइन. बोलिए. कौन सा? अच्छा देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है बेटा? डिनोमिनेटर बड़ा है ना. हमारे आम के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एक बच्चे को एक आम नहीं मिलेगा, पर 0 से ज्यादा तो मिलेगा. लेट्स से 1 मैंगो डिवाइडेड अक्रॉस 25 चिल्ड्रन. थोड़ा एक फाइबर होने से भी तो मिलेगा. यू मोर देन 0. आर यू गोइंग टू गेट 1 मैंगो? नो. सो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन मींस पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, द पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू लाई बिटवीन 0 and 1. So its value is greater than 0 but less than 1. Means the number will always lie between 0 and 1. So it becomes so easy. See, whether I tell you plot 5 by 8, plot 1 by 143 or plot 3 by 81, are these numbers all proper fraction? Yes, all these numbers will be lying between 0 and 1. No questions asked. But they will not give you to plot a number which becomes difficult to plot because of drawing purpose. They'll give you an easier number to plot. Shall we now check how to plot a number? So I have taken a proper fraction which is 5 by 8 on the number line. Are we fine? ठीक है. अब आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे देखिए. हमें करना क्या है? It lies between, we know. अब आप मन में सोचो, मन में सोचो क्या 5 by 8 is such a number जो 0 से बड़ा है but is less than 1. Do you agree or not? मतलब पूरा मैच 0 और 1 के बीच में होगा. अभी ड्रॉ मत करो, हाँ, मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा. तो मान लो दिस इज 0 ऑन माय नंबर लाइन एंड से दिस इज 1 ऑन द नंबर लाइन. सर आपने इतने डिस्टेंस में 1 लिया, मेरी मर्जी. दिस इज इंक्रीजिंग ना. We are not relevant. I am not going to show you 376 here. That is of no relevance because I have to plot this number and this number lies in this zone. Sometimes if your ma'am says why is your number line so small, you are trying to show the number what you have to plot. I need to go to your house. पूरा टावर देखने की क्या जरूरत है? As long as my drawing is correct. And arrow means it goes on. ठीक है? Now what we are supposed to do, look at the denominator. What is the denominator now? Okay. So given rational number can be proper. So if we have proper fraction, then our step number 2 is mark 0 and 1. You don't do anything right now. Just listen to me. Don't do anything. It is 8. Break this portion into 8 equal parts. Hold on. Then my third thing will be pick the denominator. Pick the denominator. In my example, what is the denominator? 8. Right? And then I say divide the portion 0 to 1 into denominator that is bracket 8. That is the example. Denominator equal parts. So if your denominator was 4, you will make it 4 parts. If your denominator was 8, you will make it 8 parts. Now look, how do I know how to make 8 equal parts out here? फंस जाएंगे पहले.
इसीलिए पहले 1 मत लिखिए, दैट्स व्हाई आई सेड डोंट ड्रॉ. Now, to make the diagram look nicely, I will take 1 inch as one part. आप 2 centimeters को 1 part ले सकते हैं. Then 16 centimeters will make 8 parts. Are you getting it? एक सुंदर सा 1 आना चाहिए. Wait, don't draw. Look, what I am doing, and online बच्चा है ना, Ritisha and all, just keep listening to me. So I am marking on inch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मेरा 8 तो यहीं पे हो गया, तो मैंने इसको डाल दिया 1. Let me check whether I've got 8 equal parts. 1 part, 2 part, 3 part, 4 part, 5 part, 6 part, 7 part, 8 parts. If you feel that this is getting it smaller, छोटा हो गया है, तो आप 2-2 इंचेस से जाइए. आइडिया इज सुंदर दिखना चाहिए. Shall we go by 2 inches? ये थोड़ा ज्यादा छोटा. Wait, don't draw. अभी मैं इसको ठीक करता हूं फिर. So let me draw a number line and I have to catch 8. So मैंने ये नंबर लाइन लिया. ऐसा कुछ नहीं कि 0 सेंटर में होना है. मैंने यहां पे 0 लिया. 2 inches. 1, 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now it looks better. मैंने इसको 0 नाम दिया और इसको 1 नाम दिया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो यहां एक लाइन लिखूंगा. I'll write a line here that when you do this thing, choose a nice scale. Scale means not this, the scale factor. Do you understand what is scale factor? Like I used 2 inches. When I used 1 inches, it was looking very clumsy. If I use 2 inches, the diagram looks very beautiful. Have you understood till here or not? Okay. Now what we have to plot? 5 by 8. अब मन में दूसरा चीज सोचना है. क्या सोचेंगे? ऐसा देखो. अब दूसरा चीज सोचना है. हमारे पास एक डेयरी मिल्क है जिसमें 8 पार्ट्स है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 पार्ट्स डेयरी मिल्क. हमने कितना खाया? 5 portions of that dairy milk. Have you understood? 5 portions. ये एक पोर्शन हो गया, ये 2 पोर्शन हो गया, ये 3 पोर्शन हो गया, 4 पोर्शन हो गया, ये 5 पोर्शन. That means this is 5 by 8. Maybe you have not understood. 5 by 8. 5 by 8 means in a unit test of 8 marks, I scored 5. 5 by 8 means out of 8 parts of a dairy milk, I ate 5 parts. So if you look at this number, tell me what will be this number. This number will be 1 by 8. Very good. This will be 2 by 8. This will be 3 by 8. 4 by 8. 5 by 8. 6 by 8. 7 by 8. 8 by 8. 8 by 8 का मतलब 1 ही तो होता है भाई साहब. मैच हो गया. गेम ऑन. वीडियो कॉन. भाई कहाँ गया लाल पेन? ये. So this is your number. और यहां पे हम क्या लिख देंगे? P लिख देंगे. हम बोलेंगे P is equal to 5 by 8 on the number line. अब देखो तो, isn't my drawing really looking like a selfie point? Yes. That's how we draw. Hannah, Harshit and Ritisha, any doubt that you have not understood? So let's revise once again. Look, the question may be, we are now dealing with only positive numbers, proper or improper. If it is proper, value is always less than 1. That means number lies between 0 and 1. मन में सोच लेने का 0 and 1. फिर क्या करेंगे? 1 पहले प्लॉट मत करो, डिनोमिनेटर को पकड़ो. डिनोमिनेटर जितना है उतना पार्ट करके उसको 1 करो, तो ड्राइंग देखने में सुंदर लगेगा. फिर न्यूमरेटर में जो है वहां पे गाड़ी रोक दो और साथ में खड़े होके एक सेल्फी खींच लो. ये हमारा प्रॉब्लम बन गया. मजा आया? कीजिए. और अगर आपको मजा आया तो आप ये 2 प्रॉब्लम कीजिए. तो जरा 3/4 को प्लॉट करो बच्चा लोग, और 5/7 को प्लॉट करो, और हो जाओ खुश. क्यों बैठे हो खाली? बजाओ ताली. Really, how do you know this is 1? Now, how do you know this is 1? No, my question is not that. How do you know this is 1? What number are you trying to plot, my dear?
3 by 4. How? That means this should be 4 equal parts. So I said first make 4 equal parts and name the last one as 1. Listen to me. How will you make it 4 equal parts? It won't be accurate. Are you getting it? So you can do inches or 2 centimeters as 1 unit. That means at 8, see, Bakul, it will be like this. Don't do like this. Hold it here. You want to keep this as 0? Okay, let's keep this as 0. Okay, this is 0. So this is a 0. So let this be 1. We have to make 4 parts now. 2, 3, 4. This is your 1. Right? 1. This is 1. 1 part, 2 part, 3 part, 4 part. 4 part. In the question enta sir? 3 part out of 4 part. ఒకటి రెండు మూడు. So this is your point P. And you can write P denotes how much? 3 by 4. 3 by. How do we write 4? Have I written it correct? Yeah, I'm writing from the opposite side. How many did not understand? I have started with the exercise. Very good. You can do the exercises are for, I am the coach. I only teach how to play the cover drive. Front foot forward, bat with the pad, head aligned, and the follow through should be straight. And rest of the practice you do at home. Next day when you get bold, I make you kneel down out here. That's the only difference. Understand? Better understand. इसलिए समझ में आया बच्चा? वो कर पाए 5 by 7. 5 by 7 में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को पिक करेंगे. कितना है? 7. 7 इक्वल पार्ट में 1 रखेंगे और फिर 5 पे सेल्फी पॉइंट. ए अविक साहब समझ में आया? हाँ जी सर. तो भैया गया था तेरे साथ छुट्टियों में? हाँ. ये 2 बार लाइन नहीं खींचते बेटा, 2 बार कारपेंटर लाइन खींचता है. ज्योमेट्री स्टूडेंट्स एक ही बार खींचते हैं, वो सिंगल इंप्रेशन. 2 बार खींचने से ना पेंसिल को यहां रख लिया कर. समझ गया? 2 बार लाइन नहीं खींचते, लाइन एक ही बार. हो गया? कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? सृष्टि कैसे कैसे कर रही हो देखो. हाँ बढ़िया. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7. वेरी गुड. होशियार बच्चा. अत्य हो रहा है तो ना, खाली एमएमएस बना रहा है बैठ के. 1. हाँ अभी दिखाओ, कौन सा दिखाना है तुम्हें? तो अभी भी 5 by 8 कर रहा है. And who will do those 2 questions? My daddy? Darling, have you understood? So you are doing now what? 5 by 7. ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు 7. Good. And at 5 you make 5 by 7. Very good. भाई किसी के ऊपर आजमानी है क्या ये? समझ में आया? तो हाँ सर. बहुत दिनों से ये आजमाया नहीं किसी के ऊपर, मजा आ रहा था. चलें आगे. Shall we now do for improper fraction? Okay. Can we do proper negative? Let's take proper negative also. All of you can plot now. No issues. Now let's do proper negative. ठीक है? कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है. Now let's do proper negative. And then we will do improper. And in one shot we will clear everything. इसे मिटाओ. बहुत ज्यादा हो गया. Okay. Now we'll do if given rational number is proper fraction. Hey, who's that? But it's a negative proper fraction. Got it? Negative proper fraction. Example, negative 3 by 5. Negative 3 by 5. Negative proper fraction. ठीक है? What is the value of a proper fraction? Always less than 1. ठीक है? Negative है. The only catch here is negative 3 by 5 is a number which is what? Which is greater than negative 1 but less than 0. Just the opposite thing.
नेगेटिव ना, सो इट इज गेटिंग प्लॉटेड ऑन दिस साइड. अच्छा, 3/5 इज व्हाट? लेस देन 1. नेगेटिव बोले तो किस साइड आएगा? जरा कॉमन सेंस लगाओ ना. 0 और ये है -1. बिटवीन 0 एंड -1 हु इज बिगर? 0 इज बिगर. एंड नेगेटिव 3/5 कहां रहेगा? एनीवेयर हियर रहेगा. So is the number not greater than -1 and less than 0? है ना? Understood? बस इतना ही काम करना है आपको. Rest process is same. Rest process is same. Sir, what do you mean by rest process is same? Then sing the Doraemon song. लाइन सा बना ऐसे, फिर उसमें 0 सा लगा, because we are going on left hand side. डिनोमिनेटर को पिक करो. कितना है? 5. और 5 पार्ट्स पे मार्किंग करो. चलो कैसे मार्किंग करेंगे? इससे मार्किंग करते हैं. ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट. तो ये हो गया -1. कॉमन सेंस वाली बात है. ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -1 बाई कितना? 5, -2/5, -3/5, -4/5, और ये है -5/5. बोले तो -1. हमें क्या प्लॉट करना है? -3/5. तो -3/5 पे सुंदर सा एरो बनाइए और P लिखिए और बोलिए P रिप्रेजेंट्स -3/5 और देन टेक अ सेल्फी बिसाइड योर नंबर लाइन. जान चाहता है. Have you understood? ये आदमी यहाँ पागल का तरह पढ़ाता है ना, गाना गाता है क्या डोरेमोन जैसा. मैं हूं एक उल्टा रोबो. How many of you know how to sing Doraemon in the Japanese song? Minna minna miya. How many of you watch Doraemon first of all? सारे किरदारों के नाम बताओ डोरेमोन के. हाँ, सुजुकी. सुजुकी, खिड़की खोल के कूद. सुजुकी. शिजुका. हाँ, फिर जियान. सुनियो, जियान की मम्मी. और डेगिसुकी. हाँ, डेगिसुकी. जियान के डॉग का नाम क्या है? ये देखते हो डोरेमोन? आज जाके देखना. What is the name of the dog of Jian? Has got a dog. Yes. हाँ. डेगिसुकी होता है. Okay. चले. So you know how to do this. Shall we now move to proper fractions? Very good. Sorry, improper fraction. Correct. Children online, can I move to improper fractions now? Okay. So we move to improper fraction. ये सब लिख लिया. कहानी अब तक. चलिए, improper fraction. कितना टफ है ग्रेड 8. कितना मजा था. रोज खेलो कूदो. खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब. है ना? अभी तो यही सोचता है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों. If given rational, my English is very bad. Rational number is a positive improper fraction. Improper fraction. Positive improper fraction. ठीक है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले. एग्जाम्पल क्या लें? 11/3 ले लेते हैं. है ना? पॉजिटिव है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो कौन सा फ्रैक्शन है बेटा? जहां न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ठीक है. अब स्टेप्स लिखते हैं. स्टेप्स. स्टेप नंबर 1. स्टेप लिखो भाई. नंबर 1, कन्वर्ट टू भेलपुरी. भेलपुरी मीन्स मिक्स फ्रैक्शन. अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन बनाना आता है भाई साहब? कैसे बनाओगे? आ जाओ. 11 को डिवाइड करो 3 से. 3 3 जा
Why is there so much of noise, book dropping, pen dropping? Can't you all even sit with your stationaries and belongings at one place? शादी मत करो बड़े होके, बीवी वहां खो गया, सर ऊपर गिर गया सीट से, बच्चा उधर गिर गया खिड़की से बाहर गए। मैं बचपन से ही वैसा था। 3 3 9, ये 2, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 3 into 3 is 9 and add another 2। समझ में आया? 3 2 by 3। So convert into mixed fraction. Number 2, then you place the rational number between two integers. I did not write natural number because when we do negative side they are not rational number। अभी देखो ये नंबर देखो, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका देसी मीनिंग समझते हैं पहले। देसी, 3 आम तो खाऊंगा प्लस 2/3 आम भी खाऊंगा। I'm gonna eat 3 and 2/3। I'm gonna eat 3। Next time you bite your fingernails, I will have bitter gourd kept in her and I will here and I'll just घिसोफाई bitter gourd on your nails। और नहीं तो वहां पे मैं वो डाल दूंगा, रैट के लिए कुछ डाल दूंगा, खाओ ना नाखून में। यही सीखते हो स्कूल में, गंदा बच्चा। ओके, place the rational number between two integers। Now look at 3 2 by 3। 3 2 by 3 means 3 and 2/3। 3 and 2/3 and 2/3 is always a number which is less than 1। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन की खासियत देखो तो, इस साइड में एक नेचुरल नंबर आता है और इस साइड में क्या आता है? इस साइड में हमेशा आता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 1। अग्रीड? तो आपको नहीं लगता है कि ये नंबर 3 से तो बड़ा है और किससे छोटा होगा? बोलो तो। 4 से। बिल्कुल करेक्ट, 4 से। किसने 4 बोला? सही जवाब। 50,000 रुपए जीत गए आप, बहुत अच्छा खेल रहे। हाँ, वो सब इलेक्ट्रॉनिक ही है, मैं थोड़ी पैसे देने वाला हूं। 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। समझ में आया? यही प्रॉब्लम का कैच है। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद ड्रॉ द नंबर लाइन। लेकिन रुक जाओ, तुम लोग ड्रॉ मत करो अभी। ड्रॉ द नंबर लाइन। भाई साहब यहां पे कैच है, अब ड्रॉ मत करना, मुझे देखो। ड्रॉ द नंबर लाइन and make 2 tears, theorem here and theorem here। Instead of writing 0, my dear children, please write the lower bound, that is 3। If your ma'am tells where is 0, 0 इस साइड है, हमें 0 से मतलब नहीं, हर बार 0 थोड़ी दिखाना है। आपने वर्ल्ड मैप देखा है? वर्ल्ड मैप में इंडिया सेंटर में आता है ना, क्योंकि यू ऑल आर देसीज। इफ यू गो टू एन अमेरिकन स्कूल एंड यू आर इन अमेरिका, उनके वहां अमेरिका सेंटर में आता है, जो जैसा है वो वैसा लेता है। अल्टीमेटली द वर्ल्ड मैप इज राउंड। Yes or no? So this is your 3। Then make the next number 4, draw the number line। Number 4th step is pick the denominator, draw the number line, mark the left limit, which is example में हमारा 3। Pick the denominator and draw parts equal to denominator। Draw parts equal to denominator। Now look at me, what is the denominator? 3। Now I'll draw parts equal to the denominator। तो मैं इसको अच्छा करने के लिए क्या करता हूं? 3-3 इंच में लेता हूं। 1 2 3, 3 parts and mark this point as the upper limit 4 and mark the upper limit, that is example 4 on the last mark। Please, this line has become lamba but I hope you understand। हिंदी में बोले तो नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, लोअर लिमिट को बिना कुछ देखे ड्रॉ कर दीजिए, फिर जो डिनोमिनेटर है उसी के मुताबिक इक्वल हिस्से कीजिए और फिर आखिरी हिस्से में हायर लिमिट को लिख दीजिए। हो गया? अब आप सिर्फ इसको प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। 2/3, दिस इज व्हाट? 1/3, दिस इज 3 and 1/3। हैव यू अंडरस्टूड? 3 and 1/3
3 and 2/3, and this is 3 and 3/3. तो इसको करके देखो, 3 3 सा 9 + 3, 9 + 3 कितना होता है? 9 + 3, यहीं से फेंकूंगा ना, किसने 11 बोला? 9 + 3 होता है 12, और 12 को 3 से डिवाइड करने से कितना होता है भाई साहब? मैच कर गया? 3 and 1/3, 3 and 2/3. So this number is your, this is your P, and P represents 3 2/3. Generally, they will never give you negative improper fractions. ये समझ में आया? Clear? Shall you plot something? चलो तुमको plot, you all plot. Hey Hannah and Harshit and Ritisha, have you understood this one? How to plot? Okay, so you all take a question. You plot 17/8, and you all on the same number, on a different number line, you also plot 19/4. Try to plot these two numbers, 17/8 and 19/4. सबसे पहला स्टेप क्या था? मिक्सड फ्रैक्शन बनाइए. Today I have cleaned my house, that too mopping the floor thrice. You dare you do any droplets out here on my floor today? From tomorrow you are free to do anything. जान लगा के घर साफ किया हूं. शार्पनिंग पे कंपनी गार्डन समझेंगे. 17/8. 17/8 as a mixed fraction is what? 8 2 are 16 plus 1 17. Correct? Yes. So this number will lie between 2 and 3. This is the lower limit. This is the lower limit, and it will lie between 2 and, because this portion is less than 1 na, so it will lie between 2. Hannah, did you understand this? It will lie between 2 and 3. I got confused when I saw the limits. No, but are you now okay? Yes, sir. Okay, and I'll just do this one also. Let's do this one, Hannah, together. 19/4 can be represented as 4 4 16 plus 3 19. It's between 4 and 5. It's between 4 and 5. Superb. बस बनाइए अभी. क्या हो गया? हाथ में दर्द हो रहा है? हथौड़ा मार दूं? क्रूर सिंह हूं मैं. ये क्या लाइन बना रहे हो? क्या बना रहे हो? रेल की पटरी बना रहे हो? स्केल रहने के बाद ऐसा ड्राइंग. अनन्या का ड्राइंग कुछ ऐसा बन रहा है. देखो ये क्या है, देखा है? ये है बतख. बतख के पांव में पेन बांध दो और फिर इस बतख को भगाओ. थर थर. ये जैसा जैसा निशान डाल के जाएगा वो अनन्या का नंबर लाइन हो रहा है. बतख मीन्स duck. Yeah, duck, you know, Daisy Duck. My English is not that good, you know. I just try to speak, but you know. Yes, Atre Saab, are you still doing improper? If so, it is time to throw you down the balcony. What are you doing now? Proper. 2 1/8. समझ में आया? मारे डूगे चे? 2 1/8. 2 1/8 कौन सा कर लिया यार तूने? Oh, 17/8. So 2 1/8 will lie between 2 and 3. Means from 2 and 3 you will break it into 8 dairy milks, and the first dairy milk is your answer. Darling, have you understood? Will you be able to do now? You have any other question? When you started the day you had a lot of questions on number line. Now you will have question on multiplication because I have not taught that. Yes, anyone needs my help? Tekbir, भाई साहब ठीक है ना? बस कर लेना भाई साहब ये एक्सरसाइज को भी. And for the good information of all, the sadistic pleasure that I get, very soon we will be ending force and pressure, and once we end this, the missile gets loaded. And I'll tell you a date also, after which you can come and keep your test copies here. Test copies can be like your
पतला कॉपी, जो छोटा कॉपी, जो आपको रहे, आपके घर में जो यूजेबल कॉपी है आप यूज कर सकते हैं. In one copy, I say better because your performance can be tracked. Can I do Ravi? आपका हो गया, सबका हो गया? सर मैं लास्ट वाले हाँ, लास्ट वाले वगैरह ये सब मिटा दो, कहानी. चलो. Yes. Now we will go to multiplication of rational numbers. Multiplication of rational numbers. Rational. Everything is easy, darling, if you know. If we don't know, then everything is tough. How was the paper? Paper is always easy. Checking is always bad because I don't get marks according to the way I do it. समझा इसको? चलो. Multiplication, where the British will say multiplication, you know. Multiplication. Multiplication. So in multiplication, let us first see the properties. Properties. The first one is known as closure. Closure stands for if a by b is a rational number and c by d is also a rational number, then a by d into c by d will also give you a rational number. You don't believe me? 2 upon 3 multiplied by 4 upon 7, it still gives you 8 upon 21, which is a rational number. But you start thinking a little bit more devilish and you say 3 upon 2 into 3 by 2. Now here you say this strikes off this one strikes off this, you get 1, but 1 is still a rational number, can be written as 1 upon 1. And in case if you have a number 2 by 3, and you multiply it by something called 0 by 1, which is a rational number, you still get a rational number, which is 0 by 1. That means rational into rational is always rational. Understood? Very good. Let's come down to property number 2. Associative. Associative is simple. Associative property is like having food at barbecue nation. पहले starter खाओ या बाद में खाओ, खाने से मतलब है. It means I by B being multiplied by C by D, and they say you multiply E by F. You're not happy with this. You say, I'm going to do C by D into E by F. Siri, tum chup ho jao. Okay? Into I by B. It makes more sense to do in this way. Whichever way you do, the answer is going to come the same. Whether you do the Moscow way or you do the Ukrainian way. समझे? पहले इसको ले लो कि बाद में इसको ले लो, नंबर वही आएगा. हो गया? लेकिन पहले पढ़ना था कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव क्या है? मगनलाल इंटू छगनलाल इज इक्वल टू छगनलाल इंटू मगनलाल. A by B into C by D is same as C by D into A by B. लास्ट वाला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव. वो माँ का प्यार. माँ हमेशा पहले बच्चों को खिलाती है, फिर खुद खाती है. डिस्ट्रीब्यूटिव. Have you understood? Wait, darling. Yes. Or is it overhead transmission? We are always allowed 2 of the over. TV Ampacho director, we've got a review for a bouncer. But that was very well within your reach. For you, everything will be a bouncer. Because the likability between us is so good. We are opposite poles of a magnet. You like me and I like you. Okay, number 4 is known as distributive property. नाम सुनने से लगता है डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये बांटेगा. कैसा? I by B is a rational number which is being multiplied with C by D plus E by F. Do you get it?
Bodmas tells me, do this first, followed with the multiplication. I hope you understand what is Bodmas. इंग्लिश ठीक है तो बॉडमस समझ में आता है ना? पहले ब्रैकेट हुआ करेंगे, बाद में ये करेंगे, ठीक है? लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव हमें कहता है नो, डिस्ट्रीब्यूटिव इज लाइक कबड्डी कबड्डी. दिस वन इज गोइंग टू रेट दैट ब्रैकेट कबड्डी 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 कबड्डी. सो इट फर्स्ट गोज a by b into c by d. उसके बाद क्या है? प्लस, बैठा दीजिए प्लस, फिर रेट करेगा a by b into e by f. It's like two children and mother. Idli, 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 idli. Okay. You must be copying at home about me, right? Going home and copying. There are many children who go home and do my copy. Acha, what is my name in your group, by the way? You all have not yet kept a name for me. ऐसा कैसे? एक महीना होने को आ गया. खरूस, जालिम, क्रूर सिंह. इसके भाई के बैच ने कितना नाम रखा था? कोरोना, ओमरिकॉन, AK-47. The other batch named me Hitler. On my birthday, they made a picture of Hitler. They bought Hitler's photo and morphed my picture on it. Hitler, Krur Singh. Social teachers like Okay. I should know what is my name. Otherwise, I know how to get my name from here. अभी तक नाम नहीं रखा तुम लोगों ने. बड़े अच्छे बच्चे हो. अब भाई साहब समझ में आया प्रॉपर्टी सब? हाँ, बस ये चैप्टर के लिए याद रखना, बाद में मल्टीप्लाई करने से मतलब है. चले? All of you understood? Closure property tells me a multiplies means rational into rational gives me rational. Commutative, Magan into Chagan is Chagan into Magan. Associative, whether you eat the starter first or eat it at the end, doesn't matter. Distributive, mummy, idli, idli. और बीच में जो है वो बिठा देना भाई साहब. समझ में आ गया? आइए एक और चीज देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, आओ ये आंसर खुद आप ही लोग दोगे. यू आर गोइंग टू आंसर. लुक, रुक जा रे भाई. I'll buy one bundle Handyplast and put on your lips. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, रुक जाओ, खुद आंसर दोगे. दिस इज आवर फ्रेंड समर्थ. इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया. आइडेंटिटी बोले तो क्या था? आइडेंटिटी कार्ड. हमें सामर्थ्य दिखना चाहिए यहां पे भी, है ना? तो ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 1. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है भाई साहब. समझ में आया? आइडेंटिटी बोले तो आइडेंटिटी कार्ड. Like it in the number where you say a upon b being multiplied by something that gives you a upon b, so you multiply it by 1. समझ में आया? Very good. And there is one more thing called multiplicative inverse. लेकिन यहाँ पे खेल है. Here is where children go wrong. No, ऐसे ही. Here is where children go wrong. एडिटिव इनवर्स में एंड प्रोडक्ट 0 आता है. सुनो बात सुनो, पहले समझो. नाउ यू विल आंसर, बट व्हेन यू गो टू ग्रेड 11 12 यू गो एंड आस्क ग्रेड 12. कल कोई क्लास में सीनियर बच्चा मिल जाए ना ग्रेड 10 का, उसको बस में पूछो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो डाउट में आ जाएगा. इट इज नॉट दैट ही नोज लेस देन यू, इट्स बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर. आज सुनो, एडिटिव इनवर्स को पहले देखते हैं. एडिटिव इनवर्स में व्हाट वी डू, वी हैव सामर्थ, we add with something to get a laddu. Yes or no? So additive inverse में हम किससे ऐड करते हैं? नेगेटिव सामर्थ्य से ऐड करेंगे. Now look at multiplicative inverse. This is samarth. Multiplicative means we will multiply into something. If the question was about 0, then what is the fun? We all know yaar, it has to be 0. If it had to be 0, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता ना. हम इसको थोड़ी पूछेंगे अरश तुम्हारा नाम क्या है, पता ही है.
Shall I drop some more things? Okay. First of all, he's a noisy boy and he'll bring all metallic scale, metallic pencil. So multiplicative inverse is not about the hunt for 0. It is the hunt for 1. So we will multiply it with उल्टा सामर्थ. भाई साहब समझ में आ रहा है? मैथ समझो. पर मैथ्स में उल्टा सामर्थ क्या होता है? रेसिप्रोकल. सिंपल. 3/4 तो ससुरा का मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आए. 4/3 हो गया. Multiplicative inverse is always reciprocal. Are we clear? Additive inverse is always negative of the number because your hunt is for 0. Here your hunt is for 1. Why is my hunt not 0? Any idiot knows that to get a 0 you should multiply with 0. Have you understood? Very good. So far I have been struggling on the board. Now it's your time to struggle with your books and for me to do aram. Take out your exercise. 1D. 1D. And start doing from question number 1, galloping. 1D, D for Delhi. D for Delta. Next time you say 1D, I'll put toothpaste on your teeth. E. Haan, 1D, children, D for Delta. 1B. 1B is what? 1B straight away qualifies for homework, my dear. Yeah, that's all drawing number lines. And don't break your head too much on 1B. If you know to plot 2 points, then I think you know to plot other points also. Okay, don't break your head too much on 1B. I'm not asking anyone to do all the problems, but see, if I'm giving you a liberty, it means if I'm putting a liberty, it means you put your own thought process. अगर आपको लगता है कि 3 प्रॉब्लम के बाद आपका हाथ सेट हो गया है तो सेट हो गया है. Hey darling, you need this book? 1D. ले इधर से कर. 1D. अरे यार पहला प्रश्न से उठाओ और घोड़े की तरह कूद कूद के करते जाओ. 1 3 5 7 2 4 6 8. अल्टीमेटली तुम हो मेहनती किसान, तुमको सभी करना है. तुम्हारी मर्जी. वैसे कुछ बच्चे अभी की तरह होंगे जो यही करेंगे घर में जाके, सर मैं 8 के आगे और कर नहीं पाया, ऐसे बोलेगा जैसे पता नहीं घर में कौन सा ये हो गया. मल्टीप्लिकेशन यू नो हाउ टू डू. कौन सा बड़ी बात है, फ्रैक्शन के जैसे ही तो है. अरश समझ में आ रहा है तो एक भी. एना रितिशा एंड दिस वन. ए हर्षित समझ में आया तो बिट्टू. वेरी गुड. चलो और लग जाइए. Please do not leave the questions which are word type. What should be added with blah blah to get tlatla? What should be multiplied with tlatla to get plapla? Those questions are very important. अभी हंस रहे हो, जब एग्जाम में शून्य नंबर आएगा ना तो हमारा चेहरा याद आएगा तुमको. शून्य मतलब समझते हैं? हाँ, लड्डू जैसा, वो भी मोतीचूर के, घी वाले. फिसलेगा ना. Hana, clear what to be done? Number lines, do as much as you get confidence. After that, I'm more worried about you doing 1D, D for Delta. Yes. And then we will do 1E also. 1E is all about division. Same thing. And I said there is nothing called division. Everything is multiplication. In fractions. Yes, sir. I think I got the wrong textbook. Why you bought a CBSE RS Agarwal or what? ICSE RS Agarwal? No, RS Agarwal is sold in 2 boards. I see you open the cover page. Show me your cover page. Okay. Yeah, do you have the book with you right now? It's Oh, it's over there. तो जाके ले लो. मैं सोचा Amazon से गलत खरीदो. कुछ भी. Go and get your right book. I thought wrong book means she has purchased the wrong book. हाँ मेरे भी डाउट हो गया. no, sir. I got the
I got means you bought the wrong book or you picked the wrong book. Can you show me the cover page of the book, dear, if you don't mind? Or just show the page. If I'm seeing your face, I can see the cover page also. Just show it like this. Why is English becoming so difficult for me? Hold it in front of your face. I can only see blue color. The voice is gone. I got the audition. This is R.D. Sharma. So fine, you do from R.D. Sharma. This is not wrong book. This is also a good book. Only thing is it will be a little bit thicker. Read it properly. Is it R.D. Sharma or R.S. Agarwal? Audition. Yes. So you go and do R.D. Sharma. Multiplication from there you do. Nothing wrong. Yes, bolo. एक मिनट, हाँ एक मिनट. कौन सा 3/5 इंटू -7/8? हाँ कौन सा अतरा नंबर बोलो. फर्स्ट क्वेश्चन 5th. हाँ -12/5 इंटू 10/-3. जो माइनस माइनस कट जाएगा ना, ऊपर नीचे है. करके दिखाऊं क्या? Straight away strike out the two minuses. They are नीचे नीचे है ना. And if you take it on top, then minus into minus is plus. बात तो एक ही होता है. ए दो पेन यूज मत करो, ढीला पड़ जाओगे एग्जाम में. This is a very good pencil in our days. This is Venus. This used to be in those days be imported from England. Berol Venus. ये किसने दिया आपको ये पेंसिल? हाँ, this pencil used to be our engineering days drawing pencil. ये ब्रिटिश पेंसिल है, इंडिया में नहीं बनता है. बेरोल वेनस का. और आज से नहीं, ये 2H है. 2H बहुत हार्ड होगा. 2H जो है, वेनस इटसेल्फ इज अ हार्ड पेंसिल. इसका इंप्रेशन आप अपने लिए HB और 2B रखा कीजिए. 2H मीन्स ये घिसेगा कम, इंप्रेशन भी हल्का आएगा. 2B मतलब घिसेगा ज्यादा पर इंप्रेशन डार्क आएगा. सो ड्रॉ द नंबर लाइन विथ HB, डू द मार्किंग्स विथ 2B. 2B ज्यादा सॉफ्ट है. या कैमलिन का एक अप्सरा का आता है, हाँ ये वाला पेंसिल जो है ना, आप देखो आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी होगी. आप इससे नंबर लाइन बनाइए. देखा हार्ड आया ना, और इससे मार्किंग कीजिए. देखो ठीक है. तब जाके आपकी ड्राइंग सुधरेगी. कैसी? आपको दिखाया था कभी हमारी प्रैक्टिकल कॉपी? ओह नहीं दिखाई. आपको दिखाना जरूरी बनता है ना. ये हमारी ग्रेड 11 की प्रैक्टिकल कॉपी है. हाँ ऐसे लिखा जाता था. मैमल्स जानते हो ना, मैमल्स. तो हमारे टाइम में प्रैक्टिकल्स होते थे. दीज आर नॉट ट्रेस्ड. हाँ, दिस यूज्ड टू बी आवर एक्सेप्टेंस लेवल. हाँ नो, दे आर नथिंग ट्रेस्ड. कि मेरे से भी अच्छे बहुत लोग थे स्कूल में. आई एम नॉट द बेस्ट. बैठ जा. और है, एक भी कट नहीं हो सकता है. नो स्टेन्स. लुक एट द ईयर 1994. और प्रैक्टिस करो भाई. ये प्रॉन है. ये 11th ग्रेड की हमारी कॉपी है प्रैक्टिकल. Grade 11. This is grade 9. One class. I have everything. I preserve them. Microscopes. Plant cell, animal cell पढ़े होगे ना? So you do all of them without any. No, tracing. Tracing is not allowed. These are experiments. That time handwriting was not that good, I'll say. तो जो लड़की जैसा लिखता था मैं. Plant and animal cells. And this teacher, now she is very old. She's still on Facebook, and I uploaded these pages. So what is the happiness she gets? 94. These were my copies. और जो आप लोग ऐसे पढ़ते हो ना, you know what is post-it? Post-its. किचन में जाके post-it लाते हो.
हमारे जमाने में पोस्ट इट नहीं हुआ करता था. This is a mechanical engineer's design data book. We never had post-its, so we used to staple with pages. ऐसे स्टेपल देखो जंग पड़ गए हैं अभी. ये क्या है? शैफ्ट्स. कहीं ये क्या है? की डायमेंशन. ये है स्क्वायर थ्रेड्स. ये क्या है? बेयरिंग. ये है स्प्रिंग कॉइल. I still use this book when I fix my TVs and all. To fix this TV, how much big should be my bolt? How much inside should I drill? Everything is here. महिंद्रा जीप देखा है ना? ये है, ये जीप का गियर सिस्टम्स है, फ्लोर गियर. This is a gear lever. Yeah. We, not me, everyone does that. So this is the difference between your batch, your generation and our generation. We never had a Google printer. No, not me. There are people who have done. So when I say that acceptance level, this is acceptance level. And when I say why you should write on white pages, this is, I did something for grade 12 just 2 days back. This is how we write. This is written 2 days yesterday, not 2 days yesterday. देखो कैसे notes बनाते हैं. ये लेवल आना है आपका. इसको कभी भी रखो, पढ़ने में मजा आता है. Presentation is about when you feel the job is done. Don't submit by time. And you want to see my most precious possession. You know what this is? Autograph. Pen. Okay, how many of you know, not Harry Potter, how many of you know a little bit about world wars and history? Okay, ठीक है. Germany before World War II was known as Germany. After World War II, Germany was separated into East Germany, West Germany. So World War II ended when? 1945. So after 1945, anything that is manufactured in Germany will be written as made in East Germany or made in West Germany. Got it? In 92, again Germany got unified. The Berlin Wall was broken. So after 92, anything that is manufactured in Germany will be written as made in Germany. No more East Germany because it is unified. This is an instrument box. It is written made in Germany. So chances are that either this is before 1945 or it is after 1992. इसका worn out लग के 92 तो नहीं होगा. आप तो ये खोल भी नहीं सकते. You don't even know how to open this. Now look at German engineering. You know how to open this? This is passed on from my dad's uncle to dad to me. It opens like this. There are 2 nails. See. Yes, I used it in my engineering. And it is like this. See. This is Germany's class. And if you see every compass and everything, it's written on the wheels. Made in Germany, made in Germany. आज तक ये compass काम करता है. So sir, if it was your dad's Uncles, dad's uncles to dad. It's before 45, na? Oh, yeah. That's why it's written as made in Germany. Because those days Germany was Germany. If it is after 45, it will be written as made in West Germany or East Germany. And if it is after, this is not after 92. And you know what is this pin used for? This is used for tightening the compasses. It still works. So you still have a You can tighten it whenever it gets loose. This is used for keeping all your lids. Sir, why do you need compasses for mechanical engineering? So drawing कैसे करोगे? So sir, your geometry. All geometry, all these alignments. Sir, your geometry. That's why this pencil caught my attention immediately. This is our day's pencil, our dad's day's pencil. The name, you can Google it. Venus means Berol Venus, B-E-R-O-L, and it is a British pencil. पर इंडिया में नहीं बनता था. इसका बॉक्स आता था, टिन का बॉक्स होता था, Berol Venus. Our days, one pencil used to cost 17 rupees or 7 rupees. I don't know whether this is now manufactured in India. It used to be costly. It means engineer's pencil. Because this tip is very much in my memory. Google करके देखना, Escola.
Sir, your most prized possession is your No, there are many like this. Don't think that I am that king who's what do you call प्राण इसमें है, इसको चुरा लेने से मेरी जान चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं. asking, sir, you said that Now this is precious because that is no more now. So this passed on from one. So this is like Viru Sahasrabudhe pen. अच्छा हो रहा है कि नहीं? खाली बातें करते रहते हो. हाँ सर हो जाता है। हो गया? हाँ हाँ, पहला दूसरा हो गया, करते जाइए. ऐसे भी घर में जाके नहीं करोगे, यहां कम से कम कर तो लो. सर सेकंड वाला LHS और RHS वाला कौन सा? हाँ, जहां वेरीफाई है वहां LHS RHS. Same exercise like the addition one. Here it is only teaching you how to do. Almost every class one notebook I have kept. KG 1. KG report cards are still there with me. KG 1, 2. Every class one notebook you keep it. You should do it from now. It will be such a treasure when you grow old. Every year keep one copy. खत्म. सेम सर आई डिडंट वांट 10th का पेन अभी भी है जिससे 10th लिखा था. 12th का पेन है. They are kept. sir, I have a pen collection. No, not that. Pens from that time. Sir, I still write with my school fountain pen. sir, I have a 1965. Very good. Keep it. Don't waste I'll it. never give it to anyone. And if you waste it, I'll break your fingers. They are all very, very prized possessions. Yeah. Very good. It's not that at our days we studied more than you. Our assessment was much more stricter than yours. Like if you don't cover your book and take it to the school, ma'am will just take the copy, throw it, cover. And punishments are always given when primary school ends, so that the primary parents can see you standing outside. Go back and tell your parents, आज ना सामर्थ को punishment लगा था. घर में अलग से स्वागत. अभी तो कुछ भी कर लिया तो कुछ भी नहीं. My child, he went into trauma. भाई साहब हो गया? हर्षित हो रहा है तो and please for God's sake complete these, huh? Yeah, because if you don't complete, question will come from here only in your tests. I never give new problems. I always, when you touch the paratha you're supposed to eat it fully, you know. So, sir, you won't make any problems there. You just give them. I always bring ghost whom you have seen once. If you have not seen, that's because you didn't go to the burial ground. One who studies on time will do good in test. Upfront, I can write and sign beside it. One who is golibaz, you know what is golibaz? करता नहीं है लेकिन आके स्टोरी देगा. सर वो एक्चुअली ना उस दिन कर पावर चला गया ना घर पे, मैं कर नहीं पाया. Ritisha, you don't worry about the book because earlier I used to teach from that book only. Last 2 years, last year I taught from R.S. Agarwal and this year I am teaching. That is an excellent book if you do all your problems from there. Lovely book. पॉ पेट्रोल देखते हो कोई? Sir, when I was in 5 years.
मैं तो अभी भी देख इसमें स्ट्रॉन्गली कब देखता हूँ। मैक्स एंड रूबी देखता है कोई? मैं देखती मैक्स एंड रूबी, मैक्स मैक्स एंड मैक्स एंड रूबी, मैक्स ठीक ठाक चीज देखते नहीं हो, मैक्स एंड रूबी नहीं। ए वन एपिसोड, फिनिश योर प्रॉब्लम। छोटा भीम तो सभी ने देखा होगा ना, छोटा भीम तो सबने देखा होगा। हाँ सर। राजा का नाम क्या है? राजा राजा टेल, इंदुमती इंदुमती उसका बेटी है, इंदु वर्मा। अभी मोटू पतलू ले, जो मतलब मैं पूछूं वो नहीं है मोटू पतलू ले। हाँ सर, वो मोटू पतलू आता है। भूल ही गए। और रोल नंबर? हाँ सर, रोल नंबर 21। Everything like a square. Max and Ruby is good. शिनचान आगे मारू देखा है कोई? एक है शिनचैन के जैसा ही है क्या? आगे मारू उसमें ही है। इश, अभी क्या देखते हो फिर? हिंदी मूवी सिफ्रा। यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब देखता हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब पे क्या देखते हैं? यूट्यूब शॉर्ट्स। बाल कब काटोगे? बढ़ गया है बाल तुम्हारा, अगले क्लास तक काट गया होगा, नहीं तो यहीं से ले जाऊंगा पिंक्स एंड ब्लूज, वो भी घसीटते घसीटते। बाहर वाले समझेंगे हो गया रहा है, चाइल्ड अब्यूज। हाँ ए हाउ मेनी डन? सेकंड बिट डन हाँ सेकंड बिट डन my yatna I give on these bones, you know ना। सर सेम सर, सेकंड वन। हाँ तो थर्ड वाला करो। थर्ड डन। Do you promise that you will finish this at home? यस सर। And there are many backloggers out here. रियान तेरा तो किताब शुरुआत से है, कवर पेज से करना बाकी है शायद अभी तक। कवर पेज से प्रॉब्लम पेंडिंग है तुम्हारा शायद। From the cover page. Cover page means this page. Problem is pending from cover page, I think. किया है ना, ऐसे ही खोली। Have you done? Yes, sir. So we'll do. Yeah, tell me. 1 minute. Anna, tell me. Shh. Which one? Tell me. exercise 1B Sixth exercise 1B sixth bit. Just चलो ये थोड़ा दिखा देते हैं, then we will close. Exercise 1D sixth. Find the value of 5/8. Okay, inverse. Okay, this is C. Have you in grade 7 studied something like x to the power minus m equal to 1 by x to the power m? Have you studied this? Do you remember? yes sir Okay. Now say suppose I tell you solve 5 to the power minus 1. What do you write? 1 by 5 to the power 1. Have you understood, Hannah? Now you are given to solve 5 by 8 to the power minus 1. Now you imagine 5 by 8. Let 5 by 8, जरा ऐसे सोचो मन में, let 5 by 8 be equal to C, some number C. Then your question is what? C to the power minus 1. What is it equal to? 1 by C to the power 1. So you convert it back. What is your C? Your C is 1 by 5 by 8 to the power 1. Right? Have you understood? Now see. Is it not same as 1 by 5 by 8 to the power 1 means 5 by 8? Agreed? Now what is it equal to? It is equal to 1 divided by 5 by 8. Agreed? We are doing in baby step format.
which is equal to 1 into 8 by 5. So answer is 8 by 5, which means given a number a by b to the power -1, it transforms to b by a. अब बड़का कहानी इसलिए बताया कि छुटका अगर समझ में नहीं आया तो बड़का देख लीजिएगा. समझ में आया? This is the long process and this is YouTube Shorts and this is बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा. अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड दिस इज YouTube Shorts. सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को डिसलाइक कीजिएगा, अंडे मारिएगा, टमाटर मारिएगा, लेकिन जब यूनिट टेस्ट आएगा तो मैं उल्टा टमाटर मारूंगा. याद रखना वो चीज. तो आज का रंगारंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है. So should you like this channel, don't forget to press the bell icon so that every time a nonsense is posted, you're the first one to get apprised about it. Thank you children and see you again. Bye. Bye.